Hello people, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita and the topic of the day is Russian formalism. Before beginning up with who the Russian formalists were, where did they come from, what was the idea that they propounded, let's first learn certain important facts associated with the school of Russian formalism that has been asked in the UGC NET exam. So the first one is the Moscow Linguistic Circle. Moscow Linguistic Circle was formed from 1920 to 1930s, and this is at the forefront of Russian criticism. It is a very important circle associated with Russian formalism. So remember, Moscow Linguistic Circle, 1920s to 1930s. Another one is the Petrograd Society for the Study of Poetic Language. तो इन दोनों को याद रखना, Moscow Linguistic Circle को भी और Petrograd Society for the Study of Poetic Language. Okay. Now the individuals associated to the school of Russian formalism are Borin Ikenbaum, Victor Slavicsky, Roman Jakobson, Yuri Tanov, and Vladimir Prop. Okay. Now, some important works are, first is the Poetics that was written in the year 1919. और ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है 3 important individuals that and those individuals are Ossip Brick, Ikenbaum एंड स्लोविस्की. याद रखो, पोइटिक्स एक वर्क है जो 1919 में लिखा गया था बाय स्लोविस्की, इकेनबॉम और ऑसिप ब्रिक. दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन मॉडर्न रशियन पोइट्री 1921 में लिखी गई है और किसने लिखी है? ये रोमन जेकबसन ने लिखी है. तो रोमन जेकबसन ने लिखा है मॉडर्न रशियन पोइट्री. वहीं विक्टर स्लोविस्की ने लिखा है ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोज. कब लिखा गया है? 1926 में. ओके. नाउ अनदर वर्क इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉकटेल दैट इज रिटन बाय व्लादिमीर प्रॉप in the year 1928. So remember all these work: 1919 Poetics, 1921 Modern Russian Poetry, 1926 on the theory of prose, and 1928 Morphology of Folktale. जो हमारे व्लादिमीर प्रॉप हैं, he is somebody who is associated to the organic formalism, right? And he has written a lot about folklore, folktales, stories, and a lot. So the most important book that he has written is the Morphology of Folktale in the 1928. Remember this. Now, अब रशियन फॉर्मलिस्ट किस बात को मानते थे, राइट? व्हाट वर देयर आइडियोलॉजीज? सो दे बिलीव्ड दैट लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री, इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. उन लोगों का मानना था कि लिटरेचर एंड विथ स्पेशल एम्फोसिस टू पोइट्री is a special function of language, right? It is possible to discover the underlying structures of a text by the study of its devices, right? तो जो हमारे रशियन फॉर्मलिस्ट हैं वो उन्हीं आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करते थे जिनमें न्यू क्रिटिक्स बिलीव करते थे. बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म जो स्कूल था वो एक एंग्लो अमेरिकन स्कूल था और जो रशियन फॉर्मलिस्ट स्कूल था वो रशिया में था, राइट? बट इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी वो सेम थी. ये दोनों ही मानते थे कि कोई भी टेक्स्ट एक ऑटोटेलिक टेक्स्ट होता है, उसकी अपनी एक ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस होती है. द वर्ड्स ऑन द पेज आर इनफ टू एनालाइज द टेक्स्ट, द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट, राइट? दैट इज़ वाई दे आर फोकसिंग ऑन पोइट्री. वाई? बिकॉज पोइट्री जो होती है उसमें ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज अपने पीक पर होती है. सो टू एनालाइज अ पोइट्री इज बेस्ट, राइट? इट गिव्स यू द स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. और इसीलिए ये लोग ये भी मानते हैं कि जब हम किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं हम उसको इतना एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं जैसे हम साइंस को एनालाइज करते हैं. ओके ओके. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we say the formalists believe that literary language is the extended everyday language just used in different way. It is. तो अब बात आती है कि लिटरेरी लैंग्वेज क्या है, राइट? तो अगर हम बात करें लिटरेरी लैंग्वेज की, तो लिटरेरी लैंग्वेज की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन लिटरेरी लैंग्वेज क्या है. तो हमारी जो एवरीडे लैंग्वेज होती है वो नॉन लिटरेरी लैंग्वेज है ना? जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू ट्राई टू प्रेज समवन इन अ वेरी रिडंडेंट एंड अ मंडेन वे, लाइक यू लुक ब्यूटिफुल, राइट? तो वो एक नॉन लिटरेरी वे है, यू लुक ब्यूटिफुल. अदर में अब हम लिटरीनेस ऑफ द टेक्स्ट में आते हैं, राइट? वी ट्राई टू फैंटिसाइज इट, वी ट्राई टू रोमांटिसाइज इट, वी ट्राई टू मेक इट अ बिट स्ट्रेंज, राइट? वी से माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ओके? और आई से चांद सा रोशन चेहरा,
or I praise her, personifying her with a river or maybe stars. So here I am giving a special touch to my everyday language, and this special touch, this strangeness added to the everyday language is what is called defamiliarization. Okay, that's what, and that is what separates a literary text and a non-literary text. So the purpose is to find that literary text generated or possesses literariness. This is the main concern of Russian formalist. What is literariness? अब literariness क्या है? Literariness is a special use of everyday language. Okay. Literary text, it uses language in such a way that everyday object could be made to look different, extraordinary and strange. Clear? Now, literary and poetic language, it makes the everyday object into something else. और ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं defamiliarization. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय विक्टर स्लोविस्की. विक्टर स्लोविस्की ने defamiliarization का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड ही गेव दिस कॉन्सेप्ट इन हिज एसे आर्ट एज टेक्निक. ओके, किस में दिया गया है? आर्ट एज टेक्निक में. रिमेंबर दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ defamiliarization, who gave it and in which essay. Okay, now for the formalist, poetry is a supreme example of defamiliarization, right? That is the purpose of literature, especially poetry, is not to convey information. It is an end in itself. उसका purpose didactic नहीं होता. It does not play a communicative role. It is a text that is an end in itself, right? जैसे हमारे वॉल्टर पीटर भी कहते हैं while he is explaining the concept of art for art's sake, है ना, कि कोई भी पोइट्री जो होती है वो सेल्फ रिफ्लेक्सिव होती है. इट ड्रॉज अटेंशन टू इट सेल्फ. ओके, नाउ इन द प्रोसेस ऑफ डिफेमिलियराइजेशन, आर्ट एज टेक्निक, राइट. अब ये क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ डिफेमिलियराइजेशन, जो कि आर्ट एज टेक्निक में एक्सप्लेन किया गया है, इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर लैंग्वेज एजर्ट्स इट्स पावर टू इफेक्ट आर परसेप्शन. जहाँ पे लैंग्वेज अपना खेल खेलती है, जिससे द वे वी लुक एट दैट थिंग चेंजेस, इट इफेक्ट्स आर परसेप्शन. रियलिटी इज मॉडिफाइड बाय द स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज. ओके, it is this defamiliarization that distinguishes a literary text and a non-literary text. Okay, Russian formalism. Russian formalism क्या है? Russian formalism मेजरली एक यूरोपियन काउंटरपार्ट मूवमेंट है ऑफ द एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट. ये मूवमेंट 1910 में शुरू हुआ था और अर्ली 1930s में it was shut down. Now why was it shut down in the early 1930s? तो वो इसलिए shut down हुआ था. It was shut down because of political pressure. ऐसा माना गया था कि वहाँ पे सोवियत यूनियन के लोग ये मानने लग गए थे कि जो हमारा रशियन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है वो एंटी मार्क्सिस्ट मूवमेंट है, और इसीलिए ही उसको प्रेशराइज करके सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने अर्ली 1930s में बंद करा दिया. ठीक है. नाउ इज ओपा जेड. अब ओपा जेड क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है. व्हाट इज ओपा जेड? OPOJAZ. व्हाट इज इट? इट इज अ सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज. ओके, इट इज अ सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज. Where was it formed? It was formed in St. Petersburg in the year 1916. याद रखो 1916. OPA Z, Society for the Study of Poetic Language in St. Petersburg. Okay. Now the individuals associated to this OPA Z are Victor Slovinsky, Boris Ickenbaum, Osip Brick and Yuri Tianov. Okay. Now, formalism was not a uniform movement. It composed of diverse theories and debates. बाद में ये जो रशियन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है इसको बहुत डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया गया था, जैसे लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म, मैकेनिकल फॉर्मलिज्म और ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म. ओके, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड द पराग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट. राइट, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्कूल एसोसिएटेड विद रोमन with Russian formalism, and the individual associated is Roman Jacobson. Okay, Prague School of Structuralists किसने फाइंड किया था? रोमन जेकबसन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द पराग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट. इसका सेंट्रल टेनेंट क्या है? लैंग्वेज इज अ कोहेरेंट सिस्टम फुलफिलिंग अ रेंज ऑफ फंक्शंस इन सोसाइटी. ओके,
उसके बाद में आता है यान मुक्रोवस्की। यान मुक्रोवस्की कहता है पोइटिक लैंग्वेज इज मैक्सिमम फोरग्राउंडिंग ऑफ अटरेंस एंड नॉट यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कोई डायडेक्टिक रोल प्ले नहीं करता, इसका पर्पस कोई भी नॉलेज कन्वे करना नहीं है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना नहीं है। पोइटिक लैंग्वेज इज एन एंड इन इटसेल्फ। ओके, उसके बाद में हमारे इकिनबॉम बोलते हैं अ लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट, कि लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट जो होता है इज मेड, शेप्ड, इन्वेंटेड, नॉट ओनली आर्टफुल बट आर्टिफिशियल इन गुड सेंस ऑफ द वर्ड। मतलब जब हम कोई भी टेक्स्ट को एक लिटरेरी टच देते हैं, उसको एक आर्टफुलनेस देते हैं, तो इन द प्रोसेस ऑफ दैट हम उसमें कहीं ना कहीं अ टिंच ऑफ आर्टिफिशियलिटी ऐड कर देते हैं। बिकॉज इस when we try to make a non-literary thing appear literary, तो हम उसको थोड़ा exaggerate करते हैं। जब हम उनको थोड़ा exaggerate करते हैं तो a tinge of artificiality is added, but that is artificiality in good sense, right? That's what Ickenbaum is trying to say. Okay, I hope now you are clear with the concept of Russian formalism. We have covered almost every important point associated to the school of Russian formalism, important from your exam point of view. So see you in the next class. If you like the session, please hit the like button, give your important feedback, share it with your friends. Okay, see you in the next class. Study hard.